Good morning, all of you. So we have to start. आज हमें जो concept start करना है, वो concept क्या start करना है कि how we can work on inner classes. Okay. So किसी की कोई query है in previous topics? Yes or no? Anyone have any queries in previous topics? No. Okay. So that means we can move on a new concept. So I think if you remember, लास्ट क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे. पहला कॉन्सेप्ट था a method local and inner classes. I'm right? यानी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे. पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था method local and regular inner classes, and we have to discuss today is the concept of anonymous inner classes. क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें? We have to learn about the concept of anonymous inner classes. We have to take the concept of anonymous inner classes कि how anonymous inner classes will work. यानी हमें ये concept हमने देखा था. Now after that we have a two different kind of concept. हम पास अब दो और concept बचे थे. That is what, if you remember, the first thing is your anonymous inner classes, and anonymous inner class will be a two type that we are aware. और वो क्या चीज थी हमारी? That is your, that we can say what we have next concept is, so basically what happened and how we can use the concept of anonymous inner classes. So see there, ठीक है.
So now what we have to discuss, the basically what happens, you know that if you want to implement any interface, we can use that directly. But we are going to understand a different one. What the different concept we want to use. So for that purpose, we can go inside this and we can use your what? We can say simply animal or d equal to new animal. That concept is known as anonymous inner classes. That concept is known as what? Anonymous inner class. इसी concept को हम बोलते हैं anonymous inner classes. Now see there. अब question आता है सर वो anonymous class है कौन? Basically, anonymous class means that the class that have a no name. A class that have a no name. See there. एक ऐसी क्लास जिसके पास कोई नाम ना हो, हम क्या बोलते हैं? एनॉनिमस इनर क्लास. देखो हमें एक चीज पता है कि हम इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते. क्या पता है? We know that we cannot instantiate the interface. इसका मतलब क्या हुआ? हम अपनी इंटरफेस कैसे नहीं कर सकते, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन आता है कि हम इसे इंस्टेंशिएट नहीं करते, देन हाउ वी कैन वर्क. तो उसके पीछे के दो लॉजिक है. हाउ द लॉजिक इज एक्चुअली गोइंग टू बी वर्क. देखो उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट होता है कि हम काम कैसे करें. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट होता है हम चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. नाउ तो देखो बेसिकली उसके लिए क्या होता है, इसके लिए दो तीन चीजें आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है. पहली चीज जरूरी होती है कि उस इंटरफेस के अंदर हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर. यानी उस इंटरफेस के अंदर कितने स्टैटिक फंक्शन, सॉरी कितने अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है. तो उन फंक्शन को मैं डेफिनेशन देना. तो हमने वो काम कर दिया. We can give the definition is what there. That's it. और आपको चीज मान के चलना है कि हम एंड्रॉयड में इस चीज को सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं. विच कॉन्सेप्ट? we are going to understand which concept. We are going to understand the anonymous cluster. ठीक है ना. एनॉर्मस क्लासेस का हम बहुत यूज करते हैं एंड्रॉयड में. कैसे करेंगे वो हम तभी देखेंगे. बट राइट नाउ एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग जावा में, सॉरी एंड्रॉयड में एनॉर्मस क्लासेस का कॉन्सेप्ट बहुत देखते हैं. So now question come in mind कि how we can do the work, how we can do the remaining concept. So that's why we will create a new class also, and we can give the name that new class is demo. Understand the point clearly? Class name is what? A demo. We want to create the main function, so we can use this and finish it. So what we have to do, we have to create the concept as inner demo. D equal to new inner demo.
and what we have to do, we can call the d dot doctor, सॉरी देखो अब हमें डी डॉट ऑक्टिव नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा डी डॉट, हमें यहाँ पे डी रखा हम इसे ओ बी कर देते हैं, अदरवाइज वी कैन गेट अ कंफ्यूजन। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ओ बी डॉट डी डॉट एंड यू हैव टू कॉल अ विच फंक्शन डॉक्टर। Now, maybe a lot of people is thinking, well, sir, actually, what is a D? So D is a reference variable of animal class. And this D is holding a kind of element class. ध्यान रखना यहाँ पे. We are not holding here the object of animal class. We are holding the object that inherit a which class? That inherit the animal interface. यानी एक ऐसी क्लास की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख रहे हैं जो क्या कर रहा है, एनिमल टाइप के किसी क्लास की इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। दैट्स इट, बिकॉज वी आर अवेयर कि पेरेंट क्लास होल्ड द रेफरेंस ऑफ इट्स चाइल्ड टाइप, दैट्स इट। यानी जो हमारा पेरेंट टाइप ऑब्जेक्ट होता है या रेफरेंस होता है वो क्या कर सकता है, वो चाइल्ड टाइप किसी भी टाइप के चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। दैट मींस इट कैन गिव द रेफरेंस, यानी पेरेंट अपने हर टाइप के चाइल्ड को क्या दे सकता है, रेफरेंसेस दे सकता है। तो एनॉर्मस क्लास का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ना हो, एंड देन हाउ वी कैन डू द वर्क, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनॉर्मस। क्लियर सभी को दीज वन सर? ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। और वहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। देखो, हो सकता है आपको वो चीज ऐसी भी मिले, समझना, विदाउट दिस यानी वी आर नॉट होल्डिंग द रेफरेंस, still you are capable to write the function, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। नाउ वी शुड रन दिस, यू कैन सी द आउटपुट। So see that you are getting the message. So that's why this concept is known as the anonymous implementation of specified interface। यानी हम अगर किसी स्पेसिफाइड इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। व्हिच कॉन्सेप्ट? anonymous inner classes। Got it, everyone? So this is a total concept for your concept that we have discussed, and that is your last thing is anonymous interfaces। Yes, anyone have queries, you all can ask। No queries? Okay। Subham, talkative is your function. Talkative is your function that present in a animal interface। And why we need to override that? Because Kishan, already I told, look, this concept you can get in Java a lot। यानी जावा में आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। और डिफरेंशिएशन समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन, सी फ्रॉम दिस प्लेस। देखो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, तो एक ऑब्जेक्ट बना, आपने एक और कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया, कॉपी एंड पेस्ट, सी देयर। और यहाँ आपने कह दिया सी, यहाँ पे कर दिया
Can this concept is possible with the help of direct concept of implementation? Yes, Roshan. Yes, Subham. क्या ये चीज पॉसिबल है डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से? किशन, sorry. हम जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट करते हैं, क्या वहां पे ये चीज पॉसिबल थी? तो ये क्या देता है हमें? एक बहुत सारा बेनिफिट देता है. And that's why we are using the which concept? We are using the anonymous inner class. Clear everyone? Okay. So now this is a basically concept. अब आपके मन में आ रहा होगा सर मैं दूसरा क्यों नहीं बता रहा हूँ? मे बी ठीक है ना. तो दूसरा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज यू आर कैपेबल टू डू दिस इटसेल्फ. असल में कुछ करना नहीं है. राइट नाउ यू आर डूइंग द वर्क ऑन द इंटरफेस. और अगर सेम कॉन्सेप्ट हम किसी क्लास के लिए लगा दें तो उसे हम बोलते हैं एनॉनिमस सब क्लास ऑफ क्लास. उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एनॉनिमस सब क्लास ऑफ क्लास. Next concept we have to discuss about the concept of generics and collection. बट उसको स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे क्वेश्चन है, कितने लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप कर लिया? जस्ट रेज योर हैंड फ्रॉम चैट. आई जस्ट वांट टू सी. जस्ट रेज योर हैंड फ्रॉम चैट. तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली सभी ने कर लिया है. आई एम राइट? No. So now, next concept we have to discuss about the concept of which we have to discuss. Okay, Bunty. Means कुछ लोगों को problems हैं, but I think lot of people have done the work. Okay, so that is good. मैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है इनर क्लासेस का और फिर हम मूव करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे. आज व्हाट इट, किस पे मूव करेंगे? वी कैन मूव ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो. और आज सिर्फ मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है ना? Yeah. So now, firstly, what we have to discuss? We have to discuss the last concept on notepad.
and that concept is your, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वी कैन से दैट कॉन्सेप्ट नेम इज generic concept. Acha, how many people is aware about the concept of generic? Have you listened this word? Yes or no? नहीं सुना है. Okay. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए, आपने सुना हो. मे भी आपने एक आंसर सुना होगा, जेनरिक मेडिसिन. हैव लिसन द वर्ड. क्या चाहिए? जेनरिक मेडिसिन. तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जेनरिक कॉन्सेप्ट? तो जेनरिक मेडिसिन का मतलब होता है द मेडिसिन दैट इज वर्क फॉर दिस सिम्टम एज इज सब सिम्टम्स ऑल्सो. ठीक है ना? तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे समझना है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्क. ओके, सो नाउ क्वेश्चन कम दैट कि हाउ देन वी कैन प्रोसीड. हम चीजों को कैसे प्रोसीड करेंगे? तो फॉर दैट पर्पस इफ यू वांट टू प्रोसीड दैट थिंग, जेनरिक का मतलब होता है अ काइंड ऑफ थिंग दैट विल बी वर्क फॉर दिस टाइप आर इट्स सब टाइप. या तो वो उस टाइप के लिए वर्क करेगा या उसके सब टाइप के लिए वर्क करेगा. जैसे कि कोई चीज आपने बनाई, वो इंटीजर के लिए वर्क करेगा या उसके सब टाइप के लिए वर्क करेगा. तो इसका मतलब वो इंटीजर के लिए भी वर्क कर सकता है, फ्लोट के लिए भी कर, सॉरी, इंटीजर के लिए भी कर सकता है, लॉन्ग के लिए भी कर सकता है, शॉर्ट के लिए भी कर सकता है, बाइट्स के लिए भी. क्यों? बिकॉज इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ दिस. तो दैट्स व्हाई इंटीजर इज योर रैपर क्लास. तो जो भी वो या उसके बिलो, यानी जो भी उस चाइल्ड को यूज करके आया है, उसके यहाँ पे काम कर सकता है. एग्जाम्पल मनीष है, समझ सकते हो? आपको एक, यू कैन गेट अ प्रॉब्लम और आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है ना? तो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, आपको 2-3 महीने बाद आप वापस जाते हो तो आपको प्रॉब्लम इस बार दूसरी थी, और फिर से आप डॉक्टर के पास गए, आपने देखा कि डॉक्टर ने वापस आपको वही मेडिसिन रिपीट कर दी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मेडिसिन इज शोइंग अ बिहेवियर, इट विल बी वर्क फॉर दैट सिम्टम एंड इट्स सब सिम्टम्स ऑफ. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रॉब्लम थी वो सिमिलर टाइप की थी, इसलिए मेडिसिन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्योंकि मेडिसिन जनरल टाइप थी, तो उसका बिहेवियर ऐसा था कि इन जनरल बिहेवियर वो शो कर रहा था. Got it? Got it? ना. तो ना जेनरिक ये होता है, फिर हमें जेनरिक के साथ साथ क्या पढ़ना है? कलेक्शन.
क्या पढ़ना है? वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन, जेनरिक कलेक्शन। तो क्वेश्चन आता है हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वर्क। जेनरिक और कलेक्शन दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों का अपना अपना यूज है। तो जेनरिक का जो प्राइम पर्पस है टू मेक योर कोड इज टाइप सेट, टू मेक योर कोड टाइप। अपने जावा के कोड को टाइप सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक कलेक्शन। किसका यूज करेंगे? जेनरिक कलेक्शन का। अब बहुत से लोग मन में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप सेट? बहुत से लोगों में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप सेफ्टी। देखो टाइप सेफ्टी का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप सेफ्टी? वी कैन से टू मेक टाइप सेफ। देखो अब क्वेश्चन है एक छोटा सा, कौन encryption, okay, a kind of security. now अब क्वेश्चन एक समझना, ऑल ऑफ यू, आप कहीं प्रोग्राम पे जा रहे हो, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम प्रोग्राम में हो तब आपको पता चले, यानी किस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको एग्जीक्यूशन के बाद पता चले, या एट द स्टार्टिंग पता चले, विच थिंग इज बेटर? मीन्स आप प्रोग्राम पे जाने ही वाले थे तो ऐसा ही पता चल जाए, या आप प्रोग्राम पे पहुंचे तब पता चले कि दिस थिंग इज देयर इज अ प्रॉब्लम? विच अप्रोच इज ऑलवेज गुड? एट स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे फिर प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? वी नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दिस, वी नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दैट। और यही कौन क्या कहलाता है? दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ, दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अ कॉन्सेप्ट ऑफ, तो इसी को हम बोलते हैं टाइप से, ठीक है ना? यानी टाइप से जो करता है वो आपको एक प्रॉब्लम से रिजॉल्विंग देता है एट द कंपाइल टाइम, यानी वो आपको कंपाइल टाइम पे ही एक चीज कॉन्सेप्ट से सेव कर देगा। वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ टाइप सेफ्टी। और टाइप सेफ का मतलब होता है रिमूविंग अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन एट कंपाइल टाइम। कौन सा कॉन्सेप्ट? रिमूविंग अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन एट द कंपाइल टाइम। removing a class cast exception. Which type of exception? Class cast. Removing a class cast exception at the compile time, that is concept is what? इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोट एज अ टाइप सेफ। यानी हम अपने जावा प्रोग्राम को क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग जावा प्रोग्राम इज टाइप सेफ। Class caste means when you cannot convert your program from one caste to another caste. When you cannot convert your class from one class to another type. यानी हम एक टाइप से दूसरी टाइप में अगर क्लास को कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लियर?
यहाँ पे समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। Let's wait. Okay. Right click new and Java class, and what we have to type there. Name is what? We can do the work is child. ठीक है ना? और इसके अंदर हमने एक और कॉन्सेप्ट बना लिया, वी कैन यूज द you know now we have another class. See there and understand the point. A class, that's it. और यहाँ हमने लिख दिया, we can say extend ठीक है ना? ये काम हमने कर दिया. Now understand the things very clearly. If you can do the work like this, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हम लिखते हैं parent equal to new parent, that's any problem? No. अगर हम लिखते हैं ये child that's also not create the problem. And if we can write this parent p1 equal to new child, still there is no problem. If we can write here the child c2 equal to, and we can downcast everything child in form of child type. किसे टाइप downcast करना है? We have to downcast the p1. And last we can do the work is similarly c3 equal to, यानी अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो क्या इसकी किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है? ऑल ऑफ यू, आई एम आस्किंग विथ एवरीवन, क्या इस स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास? क्या प्रॉब्लम है बनी बंटी? ओके, so what the things is wrong in this, Bunty? Tell me. What the problem is there? यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है? There is a no syntax error. Why that is a syntax error? Tell me. It's a correct one. That is not any create any problem, Bunty.
चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को हमेशा रेफरेंस आपके पेरेंट्स ही देते हैं। विवेक, जस्ट टेल मी, आपको आज तक रेफरेंस कौन दे रहा है? Who is giving you the reference to you? तो क्या ये चीज कैपेबल नहीं है? इट्स नॉट अ पॉसिबल। It may be, no, it's maybe not. It can give you a reference. पेरेंट आपको रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज ही इज जस्ट सुपर क्लास, ही इज योर सुपर क्लास। और चाइल्ड को हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस देता है, कौन देता है? पेरेंट ही देता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान रखना। When you run this code, it will generate an error at the runtime, and that exception is a class cast exception. See there. Are you getting it? Class cast exception. किस लाइन पे आ रही है? लाइन नंबर 13, दिस लाइन। अब क्यों आ रही है इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। हमें क्या समझना होगा? हमें ये समझना होगा कि हमें काम कैसे करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, इट शुड सी दिस लाइन। हम किस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं चाइल्ड टाइप में? इस ऑब्जेक्ट में। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि वी हैव अ रेफरेंस ऑफ पेरेंट एज वेल एज अ चाइल्ड पेरेंट एज वेल एज वी हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट। यानी हम चाहते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाइल्ड टाइप में। क्या ये पॉसिबल है? यानी जो पेरेंट रेफरेंस है उसे कन्वर्ट करना किस टाइप में? चाइल्ड टाइप में। इट इज पॉसिबल। यस, आई एम आस्किंग विथ एवरीवन, क्या पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड होल्ड कर सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो यानी जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन। उसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। सो देखो, मैंने आपसे इससे पहले भी कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम जेनरिक में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो क्वेश्चन आया था कि क्लास एक्सेप्शन क्या होती है? तो यही होती है जब आप किसी चीज को एक दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाहो और वो पॉसिबल ना हो। दैट कॉन्सेप्ट नोन एज द क्लास कास्ट एक्सेप्शन। यस, आप किसी के पास कुछ now, so what the things we have to now focus again, we have to conclude this response। देखो, जब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स आई, देखो इस अब क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सर व्हाई यू आर नॉट नोटिंग द एरर इन दिस सेक्शन। हम यहाँ पे प्रॉब्लम फेस क्यों नहीं कर रहे? तो पॉइंट ध्यान रखना,
देखो रेफरेंस जरूर पेरेंट टाइप का है, बट उसने ऑब्जेक्ट किस टाइप को होल्ड कर रखा है, चाइल्ड टाइप। यहाँ P1 के पास किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड टाइप का। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉब्लम इन दिस। तो जेनरिक जो हम समझ रहे थे, तो यही कॉन्सेप्ट है, वी कैन नॉट गेट अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन आता है कैसे हम चीजों को और एग्जीक्यूट करना है एंड हाउ वी कैन डू द वर्क। सो फॉर दैट पर्पस and how we can create the generic classes, to see that we can generate the generic classes using the concept of angle bracket. Which concept? अगर आपको कोई काम करना है तो हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रैकेट। ठीक है ना, कि हम एंगल ब्रैकेट की हेल्प से कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी if any class will be start with this concept, we can say this concept is your generic type. So how we can create the generic class? So firstly, I can show you, that's how we can create a new, and we can create a one class that name is gen test. And we can create a main function also there because we require this to finish this. देखो ये जो क्लास है ये भी जेनरिक नहीं बनी है, that class is not a generic type. So what the things we have to do, हमें यहाँ पे क्या करना है? So we can do the first thing is what, we can make it a generic type. Angle bracket is there, and then we can tell here that t extends number. T extends number. A question comes in a mind, what is the meaning of T extends number? So now what happens? T is basically representing the type. T is representing the type. तो जब हम बात करते हैं टाइप की, यानी T एक्सटेंड कर रहा है किस क्लास को, नंबर क्लास को। T extending the which class, a number class. So T become a number type. जो तो T हो गया हमारा किस टाइप का हो गया, नंबर टाइप का हो गया। और हमें एक चीज पता है, नंबर टाइप विल बी वर्क फॉर एवरी टाइप, फ्लोट के लिए, डबल के लिए भी, इंटीजर के लिए भी, फ्लॉट के लिए भी, बाइट के लिए भी। गॉट इट एवरीवन? सो व्हाट वी हैव टू डू द वर्क, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, T array of A. We can create this. Now, अब understand how we can create the constructor. See there, we can have to create a constructor. So we can write gen. So we can go to the C there. How we can override here? We can go in a refactor. Inside the refactor, you can say get. You can get as a this. चलो
How we can create the constructors? We can just write gen test and see this. We have to use this constructor, the gen test select. So we have to tell here is what a t of which type, t of array type यानी a, ठीक है ना. और यहाँ पे हम मैसेज क्या लिख देंगे, we can write is what here this dot a equal to a, that's it. That already I have defined, Kishan. If you're not present in the first or second class, that's why you are getting the confusion. Okay, Kishan. We have discussed this thing a lot in first 2 days class. There's a slightly different, but both are creating a array type references. Both are creating the array type references. They are not creating the object, they are creating the references. दोनों से reference create हो रहा है. ऑब्जेक्ट क्रिएशन कभी भी ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना. या तो जो क्वेरीज होंगे पूछ सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट वी थिंक्स वी हैव टू डू. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना. इफ यू कैन डू द वर्क इज जेन टेस्ट and what we can tell here is we just tell it the integer. See there, integer. New gen test. तो यहाँ पे हमें क्या बताना होगा. We have no object right now, so that's why basically we can just left it blank. Okay. So what we have to do basically, first we can create the integer type array, I array of equal to this, and then we can use this one. 12, 45, 89, 90. Clear? So this is an integer type array. Then we have to now we have to use a next concept is what, how we can do the work is more. So for that we can use as a double. And we can say 34.66, right? Clear? तो ये क्या हो गया हमारा डबल टाइप. And then we also do the work is a float type. Look, basically we have created a how many type of arrays? We have created a 3 type of arrays. We have created here the 3 type of arrays. Question come in a mind, so what is the difference? देखो, अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो किस टाइप का है. We have told that it must be a hold a value of generic type, but that must be a integer. तो यहाँ पे हम ये नहीं यूज कर सकते. We only pass a which type value, only this object contain the integer type value. अगर आपने इसके एट्रीब्यूट में अब आपने d पास करना चाहे, you can say it will generating an error. क्या जनरेट कर रहा है, एरर दिख रहा है आपको. क्यों? क्योंकि ये टाइप सेफ नहीं. देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना. तो दैट्स वी हमें क्या काम करना होगा, वी हैव टू डू द वर्क एंड वी हैव टू सॉल्व द.
ऐसे हमने 3 फंक्शन बनाए, 1 copy this, 2 and we have integer, this is a double type, a D type, it's a G2 and that's a G3. And this is your float. देखो अब आपके किसी में एरर नहीं है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइप सेफ्टी. To make your Java courses type safe, we can use the which concept? We can use the concept of this. Clear now? Okay. So next what we have to do the work. इसके बाद हमें काम क्या करना है? How we can proceed? तो वो चीज हम यहाँ देखते हैं. देखो for that purpose how we can do the work, वो समझने के लिए क्या काम करना है वो हम समझने के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं. क्या काम करेंगे? We can see from there. Now we can create the one common function void add. Okay, we can call one function that is void add, and inside this we can declare one variable double sum equal to 0. Sum equal to what? We can do the work is 0. Now, what the things we have to discuss more? Question यही start होता है. How we can write the code? So basically for that we can create a loop. For हमें यहाँ किस टाइप की वैल्यू निकालनी है? T टाइप की. We can say that the reference is A1 colon और कहाँ से निकालनी है? From A, that the task is done. And we have to do the sum plus equal to A1 dot double value. The task is over. And then we can do work is system a dot out dot println. So many people thinking that so how we can get the loop, how this loop will be work. बहुत लोगों के हमने क्वेश्चन आया होगा कि लूप किस तरीके से वर्क कर रहा है. तो कितने लोगों को ये क्लियर है कि हाउ दिस लूप इज वर्किंग? सबको पता है लूप? यस और नो? कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? रोशन नहीं पता है या फिर पता है?
Okay, explain needed. Okay, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो अब समझते हैं कि एक्चुअल में लूप वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। देखो, अंडरस्टैंड दिस लूप क्या कहते हैं। देखो, फॉर, फिर हम यहाँ पे बताते हैं द थिंग्स इज अ डेटा टाइप, यानी हमें सबसे पहले बताना है डेटा टाइप, फिर बताना है वेरिएबल, ठीक है ना, एंड कोलन के बाद बताना है ऑब्जेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपको फॉर ईच लूप लिखना है तो आपको सिर्फ ये 3 रूल फॉलो करने। पहली चीज, यू हैव टू फॉलो द थिंग्स इज देयर, व्हाट डेटा टाइप यू वांट टू यूज, पहली चीज ये होगी। सेकेंड थिंग इज, जब हम डेटा टाइप यूज करते हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट द थिंग्स यू हैव टू यूज अगेन। तो यू कैन सी देयर, the point is what, a data type and then reference variable, that 2 points is clear for everyone। यानी हमें एक डेटा टाइप बताना है और हमें क्या बताना है, वेरिएबल का नेम बताना है। अब क्वेश्चन आता है कोलन के बाद जो चीज लिखी गई है वही इंपॉर्टेंट होती है। देखो, तो क्या करना है, इसके लिए हमें बताना होता है ऑब्जेक्ट, और वो कॉन्सेप्ट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कलेक्शन तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का। तो ये क्या होता है, अपने आप इटरेशन करता है और आपको आउटपुट देता रहता है। और कब तक देगा, जब तक एक सिंगल आउटपुट ही बचता है तब तक। अभी क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया ताकि इसकी एक ड्रॉबैक, एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है, हमें कभी भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन नहीं मिलती है इस प्रोग्राम की वजह से, कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप जैसे वैसे ही स्टॉप हो जाएगा जैसे उसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने तो एक वो एरर बचा ली, एंड वी आर डूइंग सम अदर बेनिफिट्स आल्सो। बट एक चीज ध्यान रखना है, दिस लूप इज ओनली यूज फॉर इटरेशन पर्पस। यानी जो ये हमारा लूप है ये सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज किया था, वो चीज कहलाती है इटरेशन करना। क्या करना? वी हैव टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेशन। क्लियर पॉइंट सभी को इतने? we have to use this for the concept of iteration। इन iterations के लिए हमें एक concept implement करना है। So can we move now? Okay, so this is the concept we have done. Now what we have to do the work now, we can call here g1 dot sum, add g2 dot add, and now g3 dot add. Clear? Now we can run this and you can see the output. आर यू गेटिंग द आउटपुट? देखो, अब एक ही फंक्शन हमारे डिफरेंट टाइप के लिए वर्किंग कर रहा है, यही चीज क्या कहलाती है एक तरीके से, इट्स शोइंग द जेनरिक टाइप बिहेवियर। दैट्स शोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक टाइप बिहेवियर। So actually anyone have queries in a mind, then you all can ask.
अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। नो क्वेरी, ओके, ठीक है। सो नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल। अब क्वेश्चन आता है, वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन। क्या पढ़ना है हमें? कलेक्शन के बारे में जानना है। तो कलेक्शन में जानने के लिए सबसे पहला काम करना है कि हाउ द कलेक्शन इज गोइंग टू बी वर्क। तो कलेक्शन कैसे वर्क करता है वो समझने के लिए हमें सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है? कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर हम नॉर्मली आपको तीन चीजें बताएंगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ लिस्ट, सेकंड इज सेट, फोर्थ इज मैप। यू कैन से थर्ड इज अ मैप। और मैं इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगा, दैट इज योर कलेक्शन। आई कैन जस्ट टेल यू वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज योर कलेक्शन। देखो हमारे पास ये सारे इंटरफेसेस हैं, ऑल थ्री आर द इंटरफेस। और लिस्ट के यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एरे लिस्ट। और सेट के यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है? जी कैन गेट एट द ट्री सेट as well as you can get the hash set. And then we have a tree map and hash. Tree map and hash. Yes, any queries? ठीक है ना? तो हमें ये कौन से पढ़ना, ध्यान रखना। These are the interfaces: list, set, map. This is the interface. Array list, tree set, hash set, tree map, hash map. That is your classes. That is your classes. So how we have to do the work? To see there, we have to come there and we can create a one program, a right click new, and we can say Java class list demo. What the name we can give in? List demo. And we have to create the main function. So how we can do the work? देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है? We have to create the array list. And array list will be hold of which type of value? String ar equal to new array list. Got it? So now you can do the work is ar dot add. You can add here any city name, so we can say add Lucknow. Then ar dot add Patna. ar dot add, और यहाँ पटना का क्या रहेगा? दिल्ली। ar dot add। देखो आप एक क्वेश्चन होता है इंडेक्स पे, मैंने कहा टू प्लेस पे हमें डालना है, वी वांट टू पुट द मुंबई। ठीक है ना? फिर हमने कहा ar dot add पे हमें क्या डालना है? वी हैव टू पुट द वैल्यू इज व्हाट? इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू पुट द वो,
That's it. So now, if I ask with you, all of you, system dot out dot println, and I can ask with you, all of you, even हमने काम और किया ar dot add this. Tell me the size, ar dot size. What is the size of this list? इस list की size क्या होगी? What is the size of this list? Yes, I'm asking with everyone. What is the size of this list? What is size of this list? यानी इस list की size क्या हो? 4, okay. 30 size होगी, okay. 12. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना। इस एरे के अंदर हमने टोटल कितने एलिमेंट्स ऐड किए हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव एडेड? तो उसकी साइज क्या होगी फिर? व्हाट द साइज ऑफ दिस? साइज का मतलब होता है हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस। द आउटपुट इज 6। आउटपुट व्हाट? 6। क्लियर एवरीवन? यानी कितने एलिमेंट से इससे मैटर करता है, साइज वो बताएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में रहेगा सर आउटपुट में क्या होगा, तो सीधे व्हाट इज द आउटपुट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। AR, now we can run this. देखो आउटपुट में क्या मिल रहा है? लखनऊ, गोवा, पटना, मुंबई, गोवा एंड दिल्ली। तो सीधे लखनऊ मिल रहा है, फिर पटना मिलना चाहिए, बट हमें क्या मिल रहा है? गोवा। तो हो क्या रहा है समझना। देखो लखनऊ, पटना एंड मुंबई विल बी रिटर्न, सॉरी लखनऊ, पटना एंड दिल्ली विल बी रिटर्न फर्स्ट। व्हाट इट? तो से देयर। फिर आपने कहा जब ये तीनों लिख गए, लखनऊ, पटना एंड दिल्ली, देन यू आर सेइंग दैट ऑन द सेकंड प्लेस यू हैव टू राइट द मुंबई। That means of indexes. Yes, exactly. That is the mean of indexes. कि इस प्लेस पे हमें ये रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट दैट सेकंड इंडेक्स, तो क्या हुआ? सेकंड इंडेक्स से पहले दिल्ली था और दिल्ली शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा? नेक्स्ट पे। तो यानी सेकंड पे हमारा क्या आ गया? वी कैन गेट इट द मुंबई। तो देखो मुंबई हमारा सेकंड पे आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी एक्चुअल में थर्ड पे गया, ठीक है ना। फिर आपने एक स्टेटमेंट और यूज किया, गोवा, एंड वो किस इंडेक्स पे ऐड करना था? 1। 0 पे ये था, 1 पे हमारा गोवा आ गया। देन अगेन अब मुंबई एक प्लेस और शिफ्ट हो गया, दैट इज दिस, एंड दिल्ली हो गया लास्ट पे। और फिर आपने कहा फोर्थ इंडेक्स में क्या ऐड करना है? वी हैव टू ऐड द गोवा। सो व्हाट हैपेंस अगेन ऑन द फोर्थ इंडेक्स द गोवा विल बी एडेड। बट अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी होल्डेड।
जो हमारा सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट है वो भी क्या कर सकते हैं, तो वो भी लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। और यही बेनिफिट होता है आपके किसका, लिस्ट का। लिस्ट में कभी भी क्या नहीं चेक होता है कि इट्स वन टाइम एग्जिस्टेड और मोर देन वन टाइम एग्जिस्टेड, दैट इज जस्ट नीड टू बी चेक, इट दैट मस्ट नीड टू बी एग्जिस्ट। अब बहुत से लोग एक फंक्शन पढ़ते हैं, समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, and what the things we have to check, we have to check here ar dot contains, और contains में हमने ऑब्जेक्ट बता दिया क्या चीज, we can pass it the गोवा। अब अगर इस लिस्ट के अंदर गोवा एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको मिल जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू मिल रहा है मींस व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टेड इन दिस प्रोग्राम। Clear? Either anyone have queries? So now question come in mind after this कि अब हमें काम क्या करना है, कैसे हम इस पे वर्क करते हैं। तो देखो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, there's a lot of logic is there। कैसे करना है वो सेकेंडरी चीज है, बट आइडिया हमेशा किसका होता है, आपका होता है, ठीक है ना। तो ये तो पहला वे था कि अगर हमें ये काम करना है तो वी कैन डू दिस। अब क्वेश्चन है तो हाउ वी कैन इटरेट दिस ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को इटरेट कैसे करें। So now you have a solution. You already have a solution. I think you all remember that a concept regarding sorry, you already aware about the concept of this concept. We are you already aware about the concept of for each method. Either we can say extended for loop. यानी आपको पता है राइट नाउ अ कॉन्सेप्ट फॉर ईच मेथड एज वेल एज एक्सटेंडेड फॉर लूप कि हाउ दैट वर्क, यानी वो काम कैसे करता है। और उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करना है वही चीज यहाँ पे समझनी है, एंड देन हाउ वी कैन प्रोसीड दैट वी कैन डिस्कस मोर। क्लियर एवरीवन? देखो सबसे पहला काम क्या होगा, वी कैन राइट एज व्हाट, अ फॉर। देखो इस कलेक्शन के अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वी हैव अ स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग वी हैव दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग एस कोलन, और कहां से मैं वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम ए आर, दैट्स इट, सीधे। एंड व्हाट वी हैव टू राइट इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, and what we call there, we can call here a, now if you run this you can get out. So you're getting an iteration of that every object. Yes, we are getting the output. Yes or no?
What is the meaning of auto there? Yes, Saket. What is the meaning of auto there? Auto is not any concept. String is your superclass itself. And we are holding a which type of value? Which type of value we are holding? So which type of value you want to iterate? हमें किस type की value iterate करनी होगी? We have to iterate the same type. अरे भाई मेरे आउटपुट देख लो ना. Just see the output. So now we are iterating a one by one object. हम एक के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? Iterate कर रहे हैं. We are iterating object one by one. Clear everyone? So now, what the next concept we have to discuss? That we are going to discuss about this concept. We can discuss about concept of Bunty. Everything is aware about which I am saying. Are you are well prepared with the collection concept? Okay. So tell me the output. System.out.println. If I say ar.remove, what is the output now, Bunty? Which one? First or last or both? What the output you are getting? Both go is removed. So firstly understand the concept, then we can move on the Android Studio.
Okay, so don't be in hurry. Okay, because in a training session, not only you there, there's other people is also there, so we have to take care of all of them. Okay, yeah. So now what the focus is there कि how we have to manage the things, हम कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी होती है. This things we have to manage, कैसे चीजों को मैनेज करना है, how we can process and all. तो बेसिकली देखो इसके पीछे दो तीन रीजंस होते हैं. There's a lot of reasons. वो रीजंस क्या होते हैं? Now tell me, what is the output with this? Lalit, that is done. Now tell me, what is the output of this? If I call ar dot get 4, what we can get? We are not going to get the Goa because one element is already removed from the list. So we are just going to get to what? Delhi. कि गोवा को तो हमने रिमूव कर दिया और जब गोवा रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली सबकी चीजें क्या हो जाएंगी? वन प्लेस बैक हो जाएंगे. नाउ यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन and we can call his what? We can call his ar dot empty. तो इससे हम ये पता करना चाहते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं. इफ दैट इज द एम्प्टी टाइप वी कैन गेट एन एरर. Sorry, it will be get a true, otherwise it will be get false. So we can get basically as a false. Now any other queries? No. So this is the first concept regarding the list. ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? लिस्ट का था. ओके, सो अब इफ वी कैन मेक अ चेंजेस इन दिस, अगर इसी में हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? एरर लिस्ट की जगह हम बना देते हैं, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री सेट. देन वी कैन नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट. हम इंडेक्स नहीं बता सकते.
Everyone getting my voice? Okay, just wait. Okay, so now hope so you are getting my voice clearly. Okay, so basically, if we can make the changes, if you're making the inform for array list, we are using here the tree set. Okay, we are just making the tree set. So now tell me what is the output now? There's also going to get the error also there. Now, firstly, tell me what is the size of this? What is the size of this set? A set. 6. Okay. Anyone else? 5. Vivek saying 5. 5. Abhishek, why we are going to get a 5?
Everyone getting my voice? Yeah. So basically what we are discussing, कितने, my question is this, कितने लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा है? How many people have learned the set before this? कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा हो? Anyone? Anyone who have not learned the set? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जो हमारा सेट होता है, ठीक है ना, देखो लिस्ट के बारे में जैसे हम कहते हैं लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट के बारे में हम क्या कहते हैं, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे ही हम सेट के बारे में कहते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। तो सेट एंड लिस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना, और वो डिफरेंस होता है कि जो लिस्ट होता है वो हमें कैसा मिलता है, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बट when you're talking about the concept of set, we can say it is a collection of unique elements. Got it? Now, अगर आप लोगों को नहीं याद आया तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। आपने एक सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिक एलिमेंट, या नाउ आई होप सो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मे बी इन 11th और 12th, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेट थ्योरी। गॉट इट? तो सेट थ्योरी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आपको क्या होता था, वहां पे नॉर्मली कलेक्शन दिया जाता था, आपको कलेक्शन दिया था तो कहा जाता था यू हैव टू क्रिएट द यूनिक सेट। आप सॉरी, इसका सेट बनाओ, तो आप क्या कर रहे थे, यू कैन फाइंड इट, आप उसमें से यूनिक एलिमेंट फाइंड करते थे, एक सेट बना देते थे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता था, आपको यूनिक ना बनाने के क्या होता है, दो सेट दिए जाते थे, तो कहा जाता है यू हैव टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिफरेंशिएशन, यानी हम ये सारा काम करते थे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट विच योर सेट, एंड आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंग। तो सेट हमेशा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे एलिमेंट कितने लेंगे, 5। दूसरी चीज, अगर आप ट्री सेट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है, ट्री सेट मींस नाउ योर सेट इज शॉर्टेड सेट। जो हमारा सेट होगा वो कैसा होगा, शॉर्टेड होगा। शॉर्टेड इन द सेंस अल्फाबेटिकली ये शॉर्ट होगा सीधे। सो दैट इज शॉर्टेड इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकली, यानी हमें यहाँ पे जो ट्री सेट मिलता है कैसा होता है, वो शॉर्टेड होता है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर वो सारे फंक्शंस होते हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हो, ठीक है ना। बस यहाँ पे गेट फंक्शन नहीं होता है, इंडेक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है, गेट फंक्शन नहीं होता है, एंड इंडेक्स कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंडेक्स इन द सेंस you cannot add any element at given index. The reason behind it is because this is a concept of, it's a concept of a tree set. A tree set is what, a shorted set. Clear everyone?
You can see your set is sorted. Now, after this, we can use the concept of here is a hash set. तो अगर आप हैश सेट को देखोगे तो आपको एक डिफरेंशिएशन मिल रहा होगा एज कंपेयर टू ट्री सेट। ट्री सेट में क्या होता था, आपको जो लिस्ट मिल रही थी वो शॉर्टेड होती थी, बट हैश सेट में ना तो ये शॉर्टेड है और ना जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया उस सीक्वेंस में है। इसका मतलब क्या होता है, हैश सेट का सिंपल कॉन्सेप्ट था रैंडम मेमोरी एलोकेशन। हैश सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रैंडम मेमोरी एलोकेशन, यानी वो आपको रैंडमली कहीं भी मेमोरी दे सकता है। प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ, यानी वो आपको मेमोरी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, रैंडमली, यानी कहीं पे भी मेमोरी दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेट की, विच सेट, अ हैश सेट या हैश, कभी भी हैश कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज फिक्स नहीं होती कि वो कहाँ पे मेमोरी एलोकेशन आपको देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इट विल प्रोवाइड यू द रैंडम मेमोरी एड्रेसिंग, यानी वो कोई भी आपको मेमोरी एड्रेस रैंडमली दे सकता है। बाकी इटरेशन का तरीका वही है जैसे हम वर्क कर रहे थे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आता है सेट का, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेट। ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, हमारे सेट का होता है। We can do the work is map 10. अच्छा, कितने लोगों ने मैप के बारे में सुना है वर्ड? हाउ मेनी पीपल इज अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप? ठीक है ना? देखो एक क्वेश्चन आया कि मैप वी कैन यूज इन विच सेक्शन, वी कैन यूज मैप इन की वैल्यू पेयर्स, यानी जब हम बात करते हैं की वैल्यू पेयर्स पे तब हम बात करते हैं मैप की। ठीक है ना? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लास 5, 6, 7 में या कहीं पे भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैच द फॉलोइंग। तो अगर आपको याद हो मैच द फॉलोइंग में कॉन्सेप्ट क्या होता था, एक साइड कीज दिए जाते थे और दूसरी साइड उसकी मीनिंग दी जाती थी, एंड देन यू हैव टू मैच इट। ओके, बट अगेन
there is like a concept of uniqueness, यानी डुप्लीकेट कैन नॉट बी एग्जिस्टेड, यानी एक की एक ही वैल्यू होगी, एक की क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी. तो नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट, यहां पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी कैन डिफाइन है द ट्री मैप. तो आस्किंग अबाउट द के, तो हमने कह दिया के इज अ इंटीजर टाइप, and then asking you the v, so we can say v is string type. Clear? Now we can create the name is tm equal to new tree map. That's it. देखो हर जगह कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ऐड, बट मैप में आपके पास ऐड नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ऐड में आपके पास so we can here the use tm dot put function. tm dot put again 1001 comma tm dot put yeah, but I'm just getting a compute basically. We have to copy this. No. So this is 101, this is see there, something like this. Okay. So if you want to print this, what the things is happen? See this system dot out dot println, and inside this what we have to pass, we can pass is the tm. What we can pass tm. So tm can be printed, and that is a collection of dictionaries. So see there. 101 Goa, 102 Delhi, 103 Mumbai, then Lucknow, then Kolkata, and then Udaipur. Okay. So what the things you can find? See there. If you see this, you are getting the shorted set. हमें कैसा सेट मिल रहा है? शॉर्टेड सेट मिल रहा है. ये हमेशा शॉर्टेड सेट देता है. That is always provide a which concept? A shorted set concept.
Now clear this point everyone. तो ट्री मैप हमें क्या देता है? विवेक टेल मी, आपके कॉलेज में क्या आपके नाम के स्टूडेंट नहीं होंगे? तो क्या उनका रोल नंबर सेम होता है या अलग होता है? व्हाट द थिंग्स इज सेम? रोल नंबर इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है ना? तो जो रोल नंबर है वो की है और जो नेम है वो वैल्यू है, तो वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, दैट्स नॉट अ मैटर, क्योंकि हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं विथ हिज आईडी। Like that, government of India is not recognizing you by your name. वो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करती है? With your Aadhaar card, with your PAN card and all. Got it? That's the concept of tree map. इसी को हम बोलते हैं tree map concept. Okay? तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कहाँ पे? इन एंड्रॉइड। अब आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एंड्रॉइड। तो आई थिंक सबके पास एंड्रॉइड फोन है, यस और नो? जितने लोग रेडमी वाले हैं वो लोग अभी छोड़ के, रेडमी या जियोमी, जो लोग एक्सेप्ट दिस फोन यूज कर रहे हैं वो सभी लोग जाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, यानी यू ऑल हैव टू गो इन योर सेटिंग। जो लोग नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना? शुभम, एक्सेप्ट रेडमी यूजर्स या यू कैन से एक्सेप्ट एमआई यूजर्स, जितने लोग भी हैं गो टू योर सिस्टम सेटिंग, then you can see, you can find there's a written is about system. निगाह, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंट, तो वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फर्स्टली आई कैन डू द दिस वर्क एंड देन वी विल मूव ऑन द रेडमी फोन। ओके, नाउ आप लोगों को क्या करना है, ओपन योर सेटिंग, फिर आपको वहां पे हो सकता है ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अबाउट माई फोन या समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? तो अगर आपको अबाउट फोन दिख रहा है तो गो टू अबाउट फोन, और अबाउट फोन में जाने के बाद आपको वहां पे कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्ड नंबर। सब लोग देखना, अबाउट फोन के अंदर आपको शायद देखो दिख रहा होगा बिल्ड नंबर।
Tap for 7 times continuously. 7 times continuously. And when you can tap 7 times continuously, you can get a one message, pop-up message. You are developer now. 7 times. सोहेल मैंने कहा जो हैं उनके लिए बात नहीं हो रही, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बात हो रही है राइट नाउ. नाउ गो बैक. आप गो बैक जाओगे तो आपको देखो ऑप्शन दिख रहा होगा डेवलपर ऑप्शन करके. निधि योर विच फोन इज देयर? Vivo. Wait a minute, I can check. Tell you. Okay. Build number you can get is very easily. ठीक है ना? अगर आपको नहीं दिख रहा तो maybe you can see there's a software version. You can see your software version you are getting. Vivo and जिनको नहीं मिल रहा है Vivo के लोगों को. Just click on that 7 times on software version. You get a message of developer option. Okay. अब Redmi वालों को एक सिंपल सा ध्यान रखना है, जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ना MIUI वर्जन, Redmi phones user, where you are getting the MIUI version, आपको दिखता है सभी को, वहां पे जाना है और उस पे 7 टाइम टैप करना है. So that is done, everyone. Everyone now able to get the developer option. Okay. So now what you have to do, click on the developer option and you can see, you will find inside this USB debugging.
You can find the USB debugging that you can just enable it. Just enable it. Not dubbing, it's a debugging. So now I wish ki everyone become a developer now from your phone, according to your phone. Are you developer or not? That we can decide in later on. Okay. Now, so basically we can start a concept regarding something. तो कैसे काम करना है चलो उस चीज को डिस्कस करते हैं. So firstly what we have to discuss that we are going to understand. After this we have to work on the concept of Android Studio. I'm just going to tell you about the concept of Android Studio. See there.
सुनो क्वेश्चन कंबाइन एक चीज ध्यान रखना, सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं या नहीं किए हैं अभी भी? Yes, everyone need to enable the developer option, Nidhi. Okay, just wait, I can give you. Just wait. Now all can join using this link. Okay.
So now see that what we have to understand. ठीक है ना, कैसे काम करना है and so on. They can lot of things we have going to use. Nidhi, basically that is basically say that because any application that is not verified by the Google apps, so you can say by your Google platform, till that application is treated like it's a misbehave. Okay, बेसिकली आपको एक चीज पता होगी कि आप अपने फोन में अगर आउटसाइड द एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करना चाहते हो, यू हैव टू गिव द परमिशन एंड दैट परमिशन इज allow from unresource means accept Play Store also. So that site always shows a warning, that is not a problem. But when you are developing your own app, then what is the problem with you? So you want to execute your application on your phone, and that's why we have to use this. Got it? So now हम लोग वापस आते हैं कहाँ पे, मैंने लिंक शेयर कर दी है. The people who have not joined the group. Okay, now so basically this is the concept of Android Studio, but हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे नहीं, समझना all up to you. What we have to say, right click, see there, unnew, new, then we have to go the project. अभी हमें काम नहीं करना, सिर्फ आप प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हैं ये देखते हैं. न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिला. देखो यू आर गेटिंग हियर द वन थिंग, दैट इज अ एम्प्टी एक्टिविटी. हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग हियर द एम्प्टी एक्टिविटी. हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द एम्प्टी एक्टिविटी. So question that key, how we can manage this? How we can manage this? So we can select this empty action, then we can say next. अब यहाँ पे you can provide your application name anything. So मैं इस application को नाम देता हूँ, I can give the name is I can just put the name is online Android. Okay, and then we can say, see there, I have picked the lollipop, but I basically go for the marshmallow. देखो marshmallow is capturing approximately 84% market, and that is sufficient for me. I'm not looking for the 100%. I'm looking for the person they can going to use the application well. So that's say I just pick the version is marshmallow. अगर आपको जितने ज्यादा सक्सेसफुली कराने हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, you can select a below version. See there, if you can pick the Kit Kat, you are getting 98.1%. If you're going to pick the Jelly Bean, you can approximately getting the 100%. If you can get the work is ice cream sandwich, see there, आज की डेट में समझना, जो सबसे लास्ट वर्जन है एंड्रॉयड का वो एग्जीक्यूट हो रहा है आइसक्रीम सैंडविच. ठीक है ना, यानी अगर हम यूज करना चाहें तो देखो, अब इसके बिलो का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको नॉर्मली. सीधे यू आर नॉट गेटिंग अ बिलो सपोर्ट. आपकी एंड्रॉयड ने बाकियों के लिए सपोर्ट क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं. So now you are only able to get the support for 4.0, that is ice cream sandwich. That is your ice cream sandwich. So but basically I'm just going to use the concept of mask, and then we can use the concept of, yeah, we can use a lollipop also, there is no problem, it's your choice. So we are getting a 94% of things, and then we can say finish. See there, if your internet connection is there, then there is no problem. Online Android. So क्या होता है, ध्यान रखना, बहुत से लोग जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है. यहाँ पे देखो एक प्रोसेस चल रही है, that you have to wait till that this process is not going to be completed. यानी आपको तब तक ये क्लोज नहीं करना जब तक आपकी प्रोसेस क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए.
So now see there, my process going completed now. But still, the two processes are running. So I'm just waiting. When that is also completed, then we can start the working. Now see there. यहाँ पे देखो ऑप्शन होते हैं बहुत सारे सेलेक्ट करने के, तो बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट करके रखना है एंड्रॉइड. सेलेक्ट करके रखोगे तो यू कैन से यू कैन गेटिंग अ समथिंग लाइक दिस. आई होप सो सबको, सभी लोग अगर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो यू ऑल आर गेटिंग अ दिस 3 folders. सी देयर ऑल ऑफ यू create the project and see that are you also getting the 3 project, yes or no, tell me. यानी आपको भी ये 3 फोल्डर्स दिख रहे हैं या नहीं, मैनिफेस्ट, जावा एंड आरईएस. जिन लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो कॉन्फ़िगर कर रखा है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था एवरीवन कैन कॉन्फ़िगर योर एंड्रॉइड स्टूडियो. किसी को एरर आ रही है? आर एनीवन गेटिंग द एरर? देखो जिसको नहीं आ रही है वो कोई मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ जिसको आ रही है दैट पीपल कैन सेंड अ मैसेज कि यस आ रही है बस. So no one getting the error message and everyone getting the 3 different folders. I'm right? Now, so firstly we have to discuss a folder that name is manifest.this. तो देखो जब आप manifest पे क्लिक करोगे you all see there's a one file that name is android manifest.xml. Everyone see this? What do I think is written there? Android manifest.xml. Clear? So now if you click on this android manifest.xml, if you click on this, see there. So now see there inside this. देखो सबको बहुत अच्छे से इस फाइल को समझना है because this is one of the most important file in your Android system. This is most important file in your Android system. Why I'm saying that this is the most important file? Because the first thing you can see there's a root tag. इसे बोलते हैं root tag. और जो root tag होता है manifest का कौन सा tag होता है? That is manifest tag. That is your manifest tag. That is your manifest tag. And inside this you have to write everything. यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहां पे आएगी? इसी manifest tag के अंदर आएगी. Got it everyone? तो manifest tag के अंदर देखो आपको एक कॉन्सेप्ट दिखता है application tag. You can see there is what written application tag, and inside the application tag see there are some attributes is written. The first concept is android : allow backup, it's a true. Android : icon, that means a icon image. ये आपकी एक icon image होती है. Icon image क्या होती है? I simply tell you that जब भी आप कोई application install करते हो you can say one default icon is created on your desktop. तो वो जो एप्लीकेशन क्रिएट होती है डेस्कटॉप पे उसी को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन इमेज. तो वो हम यहाँ से लगाते हैं, ठीक है ना.
Then we have a round icon. That means again a launcher activity. Then support RTL. It's a true. Android theme. This. That's it. यानी बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, दैट इज दीज प्रॉपर्टी. ये सारी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं. Clear everyone? Now, after this, we have another concept is activity. अब एक्टिविटी क्या होता है? What is the meaning of activity? That I am just going to tell you tomorrow. ध्यान रखना, ये चीजें हम कब डिस्कस करेंगे? That we can discuss tomorrow. ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें क्या चीज फोकस करना है? वी हैव टू फोकस ऑन विच कॉन्सेप्ट कि हाउ द थिंग्स इज वर्क. हम कैसे यहाँ पे वर्क करते हैं. ठीक है ना? तो दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया. एक्टिविटी क्या होती है, इंटेंट फिल्टर्स क्या होते हैं एंड सो. तो एक्टिविटी का सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ. एंड्रॉयड में जो भी आप देखते हो वो सब कुछ क्या होता है? दैट इज एक्टिविटी. एंड्रॉयड में आप जो कुछ भी देखते हो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? एक्टिविटी. जो भी आप स्क्रीन देखते हो वो क्या होता है? दैट्स एक्टिविटी. आई एम जस्ट रीडिंग सम मैसेजेस बेसिकली दैट यू हैव सेंड मी. ओके, नाउ तो आप में से एक क्वेश्चन आया है. दैट इज द पीपल सर सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरटीएल. आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, राइट टू लेफ्ट. ठीक है ना? ये आरटीएल हमारा वही है. ठीक है ना? सो अगर आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगा तो आप नॉर्मली कुछ लैंग्वेज क्या होता है आरटीएल में यूज करते हो. ठीक है ना? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रीड करते हो. नॉट यू आर नॉट रीडिंग फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट. The majority of language will be read from the right to left, left to right, but the some language also you can read in from right to left also. So that's why that support is also provided in Android. Got it? So यानी उसके सपोर्ट्स को भी यहाँ पे एंड्रॉयड ने क्या कर रखा है? दे रखा है. तो मीन्स तो इससे क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली जितनी भी लैंग्वेज हैं वर्ड इन एंटायर वर्ड दैट वी आर गोइंग टू बी कवर. ठीक है ना? तो दैट से आज की डेट में आप देखते हो तो एंड्रॉयड प्रोवाइड द फीचर यू कैन जनरेट द मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशंस आल्सो. बट हाँ, फॉर द मल्टी लैंग्वेज यू नीड टू डेवलप योर डिक्शनरी आल्सो देयर. क्लियर? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हम समझेंगे. ठीक है ना? आफ्टर दिस you can see another folder that is a Java. अगर आप Java folder पे क्लिक करोगे you can see, you can find there's a 3 different folders. There is a 3 different folders. One is a com.ict.online Android. One is com.ict.online Android and then bracket में Android test and then we have a concept is test.
तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, देखो ध्यान रखना, इन दोनों में हमें कोई काम नहीं करना है। एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट के अंदर वी कैन क्रिएट एवरी क्लासेस इनसाइड दिस पैकेज, वी कैन क्रिएट एवरी क्लासेस इन दिस पैकेज। क्लियर? तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जावा से रिलेटेड सारी कोडिंग कहाँ की जाएगी, यहीं पे की जाएगी, इनसाइड दिस जावा फोल्डर। नाउ वी हैव अ RES, ये बेसिकली ऑटो जनरेटेड फाइल्स होती हैं मनीष, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स देयर। ओके, इन दोनों में आपको कुछ भी नहीं करना है। These are the auto generated things that you're not able to do anything. Now, after that, you can see you have one folder that is REF. REF basically stand for the resource file. यानी इसके अंदर सारे रिसोर्सेज होंगे, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, वो इमेज हो सकते हैं, वो आइकन हो सकते हैं, वो लेआउट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है ना? ड्राइबल का वर्क होता है पिक्चर्स को रखना, लेआउट का वर्क होता है टू पुट द लेआउट्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है, एवरीवन, अगर याद नहीं रहना रख पाओगे तो जस्ट नोट डाउन समवेयर, इनसाइड द REF के अंदर किसी भी फाइल का नेम में, किसी भी फाइल के नेम में कैपिटल लेटर्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। Got it? Inside the REF किसी भी फाइल के नेम में, वो कैसी भी फाइल का नेम हो, it cannot contain the capital letter. If you can include the capital letter, you can get an error. ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम REF के अंदर कोई फाइल बनाएंगे, it is only a combination of A to Z that is in form for lower, as well as underscore, and as well as we can use the concept of 0 to 9, but cannot begin with digits, but वो digits से start नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ड्राइबल के अंदर हम रखते हैं पिक्चर्स, लेआउट के अंदर होता है पिक्चर्स, सॉरी लेआउट के अंदर हमारी डिजाइनिंग होती है, यानी हम अपने लेआउट को कैसा दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना? देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट इज मिप मैप, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिप मैप। मिप मैप का वर्क होता है कि हाउ वी कैन शो योर आइकन, जो इमेज आइकन हम यूज करते हैं, तो वो उसके लिए हम वी कैन यूज द फोल्डर इज मिप मैप, एंड इनसाइड द वैल्यूज वी हैव अ 3 डिफरेंट फाइल्स, कलर्स, स्ट्रिंग एंड स्टाइल। ठीक है ना? तो यही वो फाइल है जिसकी हेल्प से हम अपनी लैंग्वेज, अपनी एप्लीकेशन को मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। Manish, where you have to create the multi so now these find activity.xml कहां से आपने क्रिएट कर लिया, दैट आई एम आस्किंग। Yes, Manish. I'm not getting here the activity.xml. We have here the 3 XML. Colors.xml, so it will hold the information about the colors. String.xml, it will hold about the string values. And we have a style.xml that contain the information about the styles. मनीष, अभी हम उस चीज के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, दैट वी कैन डिस्कस टुमारो। गॉट इट? तो जंप नहीं करना है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, तो वी कैन मस्ट नीड टू फॉलो द सीक्वेंसिंग। ओके, नाउ तो वैल्यू सेक्शन के हमारे पास नॉर्मली 3 फाइल्स होती हैं। ठीक है ना? कलर्स, स्ट्रिंग एंड स्टाइल।
तो स्टाइल के अंदर अपना स्टाइल बना, जैसे आप CSS में स्टाइल बनाते हो ना, द सिमिलरली यू कैन डू इनसाइड द स्टाइल टैग आल्सो, सेटिंग एंड कलर्स। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अब जिसके मन में कोई क्वेरी है वो पहले पूछ सकता है आज की क्लास से रिगार्डिंग। दिस द अ फोल्डर जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यूज करेंगे। तो जिसके भी मन में कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, ऑल यू कैन आस्क। जो हमने आज पढ़ा है, जितना जितना हमने आज पढ़ा सिर्फ उससे रिलेटेड। मिथ मैप के अंदर क्या होता है निगाज, यू कैन पुट योर इमेज आइकन। जो आप इमेज आइकन यूज करते हो ना, जैसे आप जो ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो आप देखते हो आपके फोन में एक ऐप की आइकन आ जाती है, तो वो आइकन की इंफॉर्मेशन मिथ मैप में ही होती है। ड्राइवर्स में हम पिक्चर्स रखते हैं। Kishan, better way if you follow the concept is android.developers.com. No book is better than this site. Samir, is not necessary. Okay. Abhilasha, in some phone you cannot get this feature. ठीक है ना, बहुत सारे फोन्स में आपको फीचर्स नहीं मिलता है, बट Vivo app and Redmi and you can say Oppo, these are the providing you the concept of a developer. You can, if you want, you can disable the developer option. तो वहां पे उनकी जो क्लीन या सिक्योरिटी ऐप होती है उसकी हेल्प से आप ये चीज डिसेबल कर सकते हो। गॉट इट? जस्ट गो टू google.developers. Nikhil, just go to the google.developers.com. I can share you the link tomorrow. No, there are no issues. Okay. So now, goodbye for all of you and see you tomorrow at the same time. Everyone.